नमस्ते, गुड इवनिंग। मैं हूं सरोजिनी दास, सरस्वती ट्यूटोरियल से आप सभी को स्वागत है। चलो आज स्टार्ट करते हैं न्यू लर्नवेल साइंस स्टैंडर्ड 6 के चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज। सेक्शन स्टार्ट करने से पहले सभी को बोल देती हूँ, अगर कोई भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लो। साइड पे जो बेल आइकन है उस पर प्रेस कर लो ताकि जो भी वीडियो पे पोस्ट करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले आ जाए। तो चलो एक्सरसाइज की तरफ। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर यानी कि MCQs. Take the correct options. Glucose is the simplest form of sugar. Sugar and starch type of carbohydrates. Which of the following has no nutritive value? Raw phase. The nutrient that keeps the body warm is fats. Which of the following are called body building foods? Foods containing proteins. Bones and teeth remain healthy with the consumption of calcium. Consumption of lesser quantity of the food than required by the body is called poor nutrition. Rice, bread and chapati belong to cereal group. A child having reddish hair and a protruding belly could be suffering from kwashiorkor. Rahul has swelling and bleeding in his gums. He could be suffering from scurvy. Fill in the blanks. Cereals are rich in carbohydrates. Patients are given dash for instant energy, glucose. Dash solution is used to test the presence of sugar in a food sample, Benedict solution. Vitamins A, D, E and K are called dash soluble vitamins, fat. Fish and eggs are examples of dash proteins, animal proteins. Deficiency of fluorine causes dash, tooth decay. Food items containing dash and dash are called protective food, vitamins and minerals. Circle the odd one out, give regions your answer. पल्सेस, मीट, पीज एंड ब्रेड. तो यहाँ पर ऑड वन हो जाएगा मीट. मीट इज ए ऑड वन एंड बिकॉज एक्सेप्ट मीट ऑल आर एनिमल प्रोटीन. वेरी वेरी ओबेसिटी, गोइटर एंड एनीमिया. ऑड वन इज ओबेसिटी बिकॉज ओबेसिटी इज नॉट ए डेफिशिएंसी डिजीज. फ्रूट, हनी, सॉरी मैंने यहाँ पर गलत बोल दिया. पल्सेस, पीज जो ब्रेड है ये हमारा प्लांट प्रोटीन है, बट मीट जो ये एनिमल प्रोटीन है. सॉरी. फ्रूट, हनी, पोटैटो, शुगर. ऑड वन इज हनी क्योंकि हनी प्लांट प्रोडक्ट नहीं है, बट फ्रूट, पोटैटो, शुगर ये सब हमारे प्लांट प्रोडक्ट है. फैट्स, रफेज, प्रोटीन्स, मिनरल्स. रफेज क्योंकि रफेज इज न्यूट्रेंट नहीं है, बट फैट, प्रोटीन, मिनरल्स ये हमारा न्यूट्रेंट में ज़्यादा है. बोर्ड लेग्स, बेंडिंग ऑफ बोन्स, पिजियन चेस्ट, इनएबिलिटी टू सी इन डिम लाइट. तो इनएबिलिटी टू सी इन डिम लाइट ये ऑड है क्योंकि ये विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज है. ओके, विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज है, बट बाकी सब डेफिशिएंसी डिजीज है, बट ये विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज है. मैच ऑफ द फॉलोइंग. वाटर हो जाएगा हमारा एलिमिनेट्स बॉडी वेस्ट. कार्बोहाइड्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी. विटामिन के क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. कैल्शियम एसेंशियल फॉर बोन्स. प्रोटीन बिल्डिंग ऑफ न्यू सेल्स. यहाँ पर आंसर भी आप लिख दीजिए. रीराइट ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस करेक्टली बाय चेंजिंग द अंडरलाइन वर्ड्स. एक्सेस ऑफ विटामिन्स इन द बॉडी कैन कॉज ओबेसिटी. तो विटामिन्स के नीचे अंडरलाइंड है तो यहाँ पर हो जाएगा, ये वाला गलत है तो यहाँ पर हो जाएगा फैट्स. डेफिशिएंसी ऑफ आयरन रिजल्ट्स इन गॉइटर, तो आयरन के बदले यहाँ पर आयोडीन होगा. मीट, फिश एंड एग्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट प्रोटीन्स, तो प्लांट के बदले यहाँ पर एनिमल्स होगा. विटामिन बी एंड सी आर फैट सॉल्युबल विटामिन, तो फैट सॉल्युबल के बदले यहाँ पर वाटर सॉल्युबल होगा. कार्बोहाइड्रेट्स आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, कार्बोहाइड्रेट्स के बदले यहाँ पर मिनरल्स एंड विटामिन्स होगा. रफेज रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर, रफेज के बदले यहाँ पर वाटर होगा, वाटर रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर. बेनेडिक्ट सोल्यूशन इज यूज टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन ए फूड सैंपल. बेनेडिक्ट सोल्यूशन नहीं, यहाँ पर आयोडीन सोल्यूशन होगा. होल सीरियल्स आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन डी, गलत है, विटामिन डी नहीं विटामिन बी होगा. Given below are pictures of people suffering from some diseases. Identify the disease and write its name below the picture. तो ये गाइटर की पिक्चर है, ये रिकेटस की, ये ओबेसिटी के एंड ये क्वासियरकर की. तो यहाँ पर लिख दीजिए जो डिजीज़ का है तो वहाँ पर लिख दीजिए. गिव रीजन्स फॉर द फॉलोइंग. रफेज शुड बी इंक्लूडेड इन आवर डेली डाइट फॉर प्रॉपर डाइजेशन. ए ग्रोइंग चाइल्ड रिक्वायर्स मोर प्रोटीन्स देन एन adult for growth. Food should not be heated over and over again. Nutrients in it get destroyed.
We should say no to junk food, otherwise suffer from heart-related problems. Water is essential for our body. Transport nutrients, maintain body temperature, eliminate wastage out of the body. Fruits and vegetables should not be washed after peeling their skins or cutting them. The nutrient will be wasted. Very short answer type questions. Name any two nutrients found in food, carbohydrates and proteins. Name any two protective foods, vitamins and minerals. Write any one use of water drinking. Name a deficiency disease caused by lack of iodine in the body, goiter. Which is the simplest carbohydrate? Glucose. Then short answer type. What are nutrients? Useful substances present in food. That is called nutrient. Okay. What is roughage? Fiber present in food. Define a balanced diet. A diet that contains in all the nutrients, water and roughage in correct proportion. What are the symptoms of rickets? Bowed legs, bending of bones, development of pigeon chest. Long answer type question. How can you test the presence of sugar in a food sample? Take the food sample. If the food sample is solid, cross it and add a little water to it. Add a few drops of Benedict solution to it. Heat it for a few minutes. After heating, if the food sample is rich in sugar. Describe an experiment to test the presence of starch in a food sample. Take the food sample that needs to be tested and put it in a test tube. If it is a solid, cross it and a little water to it. Mix it well. Add a few drops of iodine solution to it. If the sample turns blue or black, it contains starch. What is obesity? How is it caused? Excessive intake of food containing fats and especially junk foods lead to a condition called obesity. Obesity is a condition of the body in which the person gains a lot of weight. List the symptoms of a child suffering from marasmus and kwashiorkor. Symptoms of marasmus. A child suffering from marasmus becomes very thin and lean, has dry and wrinkled skin, sunken eyes, and his ribs becomes very prominent. Symptoms of kwashiorkor. A child suffering from kwashiorkor becomes started growth, have thin limbs, scaly and dry skin, reddish hair and protruding belly. Name the diseases caused due to the deficiency of vitamin C, vitamin D, vitamin B. Also write the symptoms these diseases. Deficiency and symptoms. Vitamin C, scurvy, bleeding gums, loose teeth. Vitamin D, rictus, bowed legs, bending of bones, development of pigeon chest. Vitamin B, very weak muscle losses of weight and appetite. तो यहाँ पर आपके एक्सरसाइज ख़त्म होती है. अगर किसी को कोई भी समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिए. मैं रखती हूँ. हैव ए गुड डे.